नहीं, ये गिरने के वजह से देखें। नहीं नहीं, ये गिरने की वजह से मेरे को पेज सारे खुले फिरेंगे। ये देखें, इसके पेज सारे खुले हुए हैं। क्यों? सारे चाइनीज में बंदा देख रहे हैं सही करवा लेंगे क्या है। सोच लो पैसे कितने लाना। स्क्रीन पे अभी नहीं कहूँगा जहाँ पूरा चार्ज भी होगा टैब। एक मोबाइल है हाँ जी, कवर कर दूँगा। ये देखिए जी, ये दोस्तों इसकी डिस्प्ले की ये स्ट्रिप है, ये बैटरी की स्ट्रिप मैंने उतार दी है। इसे व्हील पैड पे थोड़ी देर रखते हैं ताकि इसका डिस्प्ले उतर सके। Redmi 9 का डिस्प्ले चेंज कर रहे हैं। न्यू टैब उसे इसे जिस पारे से उसने गलत पा दिया, इस तरह बटन ऊपर आना। हाँ जी, बस रॉके है ना बनाया क्या कैमरा है एक स्पेशल बच्चों से बनाया जी, सिस्टम तो टूटे ना आराम मोहब्बत के साथ। देखें दोस्तों, इसके डिस्प्ले टूटा हुआ था, ये ऊपर की वजह से मैं पा बढ़िया 40 में लगी हुई है। पहले भी डिस्प्ले चेंज हुआ है। वो 50 बैटरी खत्म हो गई लेकिन फुल हो गई पता नहीं। नहीं अधी होगी थी, फिर अधी फुल कितने हुई है, फुल मैं कहता हूँ क्या होगी। इसके फ्रेम को साफ करते हैं दोस्तों। ये फ्रेम साफ करने पे न्यू डिस्प्ले लगाने में आसानी होगी और न्यू डिस्प्ले की फिटिंग अच्छी होगी। ये सफाई करने का लिखा है। कुछ भाई लोग सफाई किए बगैर ही लगा देते हैं, उससे फिर फिटिंग अच्छी नहीं होती है। यहाँ देख सकते हैं हाँ जी। अच्छा जी, मेरी निकाली ना डिस्प्ले। ओके, तो प्रिंटर तो जितना मर्जी निकालो, थोड़ा बहुत काम है इसके अंदर, वो भी सीधा करते हैं पहले। साडा सजना दूर ठिकाना नहीं, जो कि कारण है नोटिफिकेशन आया कि किड तक मैंने बनाना कितना जाओ इमरजेंसी मोड में जाते हैं। इमरजेंसी मोड में टच को चेक करते हैं। देखिए टच हो गया है। Redmi 9 इसकी फिटिंग भी करते हैं, पहले थोड़ा सा इसका ब्रांड सीधा करते हैं। इसकी टेप उतारते हैं। अब यहाँ से भी इसकी टेप उतारेंगे, इसकी स्टिक को फिक्स कर देते हैं डिस्प्ले के ऊपर। ये देखिए
ये देखें जी। नीचे वाली साइड किसके बताते हैं? Redmi 9, Redmi 9। Dove lavoro, tutte parti la foto dove lo produco. Vedo cosa non rischia. दोस्तों मैंने सारे स्क्रू लगा दिए। डिस्प्ले पाउन लगे हो गए। हाँ जी क्या है? मैं क्या कार से डिस्प्ले पाउन लगे हो गए। हाँ जी वही मैं कह रहा हूँ डिस्प्ले पान लगा अरे ये बैटरी में तो सस्ती लगी मैं याद रियल पे जाना है ये दोस्तों रेडी हो गया। मेरी बात